welcome to AK Biology. Hope you all are doing well in your studies. So आज हम स्टार्ट करेंगे जूलॉजी के एक पोर्शन एनिमल टिश्यूज. So first of all we have to know what are the tissues. The tissue is a group of one or more types of cells and their intercellular substances that perform a particular function. And the study of tissues is called histology. Histology is the study of tissues. And then animal tissues के types के बारे में बात करते हैं. Based on the location and function, the animal tissues are classified into 4 types. 4 तरह के होते हैं epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. First डिस्कस करते हैं epithelial tissues के बारे में. The epithelial tissues consist of variously shaped cells closely arranged in one or more layers. The cells are held together by intercellular junctions. The epithelial tissues usually rest on a thin non-cellular membrane that is called as basement membrane. The blood vessels are absent in the epithelial tissues. Epithelial tissues में blood vessels absent होते हैं. And the tissues have a good power of repair or regeneration capacity. The epithelial tissues के regeneration capacity होते हैं. Then we have to know what is the basement membrane. The epithelial tissue lie on the non-cellular basement membrane, which consists of 2 layers. Basement membrane में 2 layer होते हैं. First is basal lamina and the second is fibrous or reticular lamina. Then basement membrane provide elasticity. Elastic support के लिए basement membrane काम करता है. Then cell junctions के types. There are 3 types of cell junctions found in the epithelium. These are the tight junctions or zonula occludens. Tight junctions के other name है zonula occludens, and gap junctions and the adhering junctions. Then the types of epithelia. Epithelial tissues के types. On the basis of arrangement and the shape of cells, the epithelia are classified into 2 groups: the simple and compound epithelium. Then what is the simple epithelium? The cells are arranged in a single layer in simple epithelium. Simple epithelium में cells are arranged in single layer. Simple epithelia are further divisible into, first है simple squamous epithelium, which is known as pavement epithelium. तो simple squamous epithelium के structure देखते हैं. इसके structure है they composed of large flat cells whose edges fit closely together like the tiles of a floor, hence called pavement epithelium. Nuclei are flattened and lie at center of cells. In the simple squamous epithelium, nuclei lie at center of the cells. Then location क्या होते हैं ये simple squamous epithelium के? The terminal bronchioles and the alveoli of lungs, wall of Bowman's capsule, descending limbs of loop of Henle, membranous labyrinth जो कि internal ear में पाए जाते हैं, blood vessels and lymph vessels. In the blood vessels, lymph vessels and heart, it is called endothelium. ये जो simple squamous epithelium है इसको endothelium कहा जाता है. In the blood vessels, lymph vessels and heart में. Function क्या होते हैं इसके function है protection, excretion, gas exchange and secretion. Sorry. Then simple cuboidal epithelium. Second type है simple cuboidal epithelium. The cells are cubical in shape and the nuclei are rounded and lie at center of the cells. Simple cuboidal epithelium में nuclei lie at center of the cells. And the cells form microvilli. ये जो cells है simple cuboidal epithelium के, the cells form microvilli that gives a brush-like appearance to their pre-border
called brush border epithelium. इसको brush border cuboidal epithelium भी कहा जाता है due to presence of microvilli that gives a brush like appearance. Location क्या होते हैं? Small salivary and pancreatic duct, thyroid follicles, proximal and distal convoluted tubules of the nephrons of kidney and seminiferous tubules of the testis, ये एक्सेट्रा, ये इसके लोकेशन होते हैं. फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं प्रोटेक्शन, सिक्रीशन एंड गैमेट फॉर्मेशन एक्सेट्रा. देन थर्ड टाइप है सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम. हम पढ़ चुके हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम एंड सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम के बारे में. अब पढ़ते हैं सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम के बारे में. द सेल्स आर इलंगेटेड एंड प्लेस्ड साइड बाय साइड लाइक कॉलम. ये कोलुमनर एपिथेलियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि द सेल्स ऑफ दिस एपिथेलियम आर इलंगेटेड एंड प्लेस्ड साइड बाय साइड लाइक ए कॉलम. न्यूक्लियस लाई नियर द बेस ऑफ द सेल्स. न्यूक्लियस नियर द बेस ऑफ द सेल्स पाए जाते हैं. सर्टेन सेल्स कंटेन म्यूकस एंड आर कॉल्ड गॉबलेट सेल्स. गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम में. द सेल्स कंटेन म्यूकस. द intestinal mucosa or the mucous membrane has microvilli to increase the absorptive surface area and called brush border columnar epithelium due to presence of microvilli. Location क्या होते हैं simple columnar epithelium के? ना they lines the stomach, intestine, gallbladder, bile duct and it also forms the gastric glands, intestinal glands, pancreatic lobules, where it has secretory role and it is called glandular epithelium. Okay, and let's comes to the function. Function होते हैं protection, secretion, absorption, etc. Then simple ciliated epithelium. The cells bear numerous delicate hair-like outgrowth. The cilia. इस cilia के presence के लिए इनको कहा जाता है सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम. दे अराइजिंग फ्रॉम द बासाल ग्रैन्यूल्स. म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स आल्सो प्रेजेंट हियर एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स. सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम टू टाइप के होते हैं, सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम एंड सिलिएटेड क्यूबोइडल एपिथेलियम. सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम comprises of columnar cells which have cilia on their free surface and they lines the respiratory tract. Fallopian tubes also lines the ventricles of brain and central canal of spinal cord etc. Then ciliated cuboidal epithelium. They consist of cuboidal cells which have cilia on the free surface. Cuboidal or cubical cells present होते हैं cuboidal epithelium में and they have cilia on their free surface. Occurs in certain part of nephrons of kidney. Then comes next the functions. The main function of ciliary is the ciliary movement is to maintain a flow of mucus or liquid constantly one direction. ये cilia जो present होते हैं इनके main function है ciliary movement is to maintain a flow of mucus or liquid constantly in one direction. And in the respiratory tract, the cilia help to push mucus towards the pharynx. Then pseudo-stratified epithelium. The cells are columnar but unequal in size in pseudo-stratified epithelium. And हम पढ़ेंगे कि इसको pseudo-stratified epithelium क्यों कहा जाता है. Because the long cells have oval nuclei and short cells have rounded nuclei. इसमें दो तरह के cells पाए जाते हैं the long cells and short cells. Long cells have oval nuclei, short cells have rounded nuclei. So although this epithelium is one cell thick but it appears to be multilayered. ये epithelium one cell thick होता है but appear होता है multilayer की तरह. इसीलिए इसको pseudo stratified epithelium कहा जाता है. pseudo का मतलब है false, इसलिए इसको pseudo stratified epithelium कहा जाता है. It is of two types, pseudo stratified columnar epithelium
pseudostratified columnar ciliated epithelium. Then comes to compound epithelium. These are multilayered epithelium. सिंपल एपिथेलियम होता है सिंगल लेयर के, कंपाउंड एपिथेलियम होता है मल्टी लेयर. कंपाउंड एपिथेलियम इज टू टाइप, स्ट्रैटिफाइड एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम. स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम इज ऑफ 4 टाइप्स. क्या होते हैं ना? स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड columnar epithelium and stratified ciliated columnar epithelium. Okay, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. द सेल्स इन द basal layer are columnar or cubical with oval nuclei. It is called germinative layer or stratum germinativum. ये जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में जर्मिनेटिव लेयर पाए जाते हैं, इसको कहा जाता है कि स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम. इन द मिडिल लेयर द सेल्स बिकम polyhedral with rounded nuclei called intermediate layer, and in the superficial layer the cells are flat with transversely elongated nuclei called squamous layer. It is of 2 type. ये जो stratified squamous epithelium है ये 2 तरह के होते हैं, keratinized and non keratinized. Keratinized क्यों कहा जाता है? ना कि in the outer few layers the cells replace their cytoplasm with a hard waterproof protein, the keratin protein. This process is called keratinization. इसमें keratinization होता है, इसलिए इसको keratinized stratified squamous epithelium कहा जाता है. The layers of dead cells are called stratum corneum or horny layer. They occur in the epidermis of skin of land vertebrate. ये जो इस तरह के केराटिनाइज्ड एपिथेलियम लैंड वर्टिब्रेट के स्किन में पाया जाता है. नॉन केराटिनाइज्ड क्या होता है? दे डज नॉट हैव केराटिन एंड ऑकर्स इन द ओरल कैविटी, टंग, फेरिंग्स एंड ओएसोफेगस. ओके, ये हो गया स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. देन स्ट्रैटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम इसी तरह के, और कोलुमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम इस तरह के होते हैं. Then transitional epithelium, it is a main second type of epithelium. It is a multilayered. It is also called urothelium. Structure क्या होता है ना? It consists of 4 to 6 layer of cells. It is multilayered, and the cells of basal layer are columnar or cuboidal, and the cells of middle layer are polyhedral. Cells of surface layer are large. लोकेशन कहाँ पाए जाते हैं? ये जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, दे फाउंड इन द रेनल कैलिसेस, रेनल पेल्विस, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड द पार्ट ऑफ यूरेथ्रा. बिकॉज ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इट इज कॉल्ड यूरोथेलियम. इसको यूरोथेलियम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो हमारे एनिमल फिजियोलॉजी में यूरिन के रिलेटेड जो पार्ट है, इसी में ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाए जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है कि यूरोथेलियम. सो in this video we all discussed about the types of epithelia, the simple and compound. In the next video there are some specialized type of epithelium or gland cells. So we will discuss the different types of gland cells and special type of epithelium in the next video. So stay tuned and do subscribe our channel, and please like and comment. Thank you.